Namaskar, myself Dr. Debanshi Dash. Debanshi Nayak. So we are doing our internship at the Institute of Dental Sciences from SOA University. What is basic life support? It is the first line of management आमे कहू. कली गोटे मिसकनसेप्शन भी चलची कि कोविड वैक्सीन जोगु हार्ट अटैक्स रो इंसिडेंसेस बहुत बढ़ी चलची which is not true. So we are here to brief you about the lack of awareness. So shall we start now? Yeah, first question to you. Hey everyone, this is Arja Akriti and आपण माने सुनुछंती 90.4 SOA रेडियो. आपण समस्त को स्वागत करछे आज एक विशेष उपस्थापना को. आज उपस्थापना रे आमे दांतर स्वास्थ्य विषय जानिबा. श्रोता बंधु, बेसिक लाइफ सपोर्ट ए विषय रे आपण निहाती भाबरे जानिथिबे. जेतेबेले जणे बेहोश हो जाचंती किंबा हठात हृदघात हेउची से समय रे बेसिक लाइफ सपोर्ट विषय रे निहाती जानिबा दरकार. तेबे केवल एही समय रे नुह दांतर स्वास्थ्य रे मध्य बेसिक लाइफ सपोर्ट निहाती दरकार. तेबे एही गुरुत्वपूर्ण टॉपिक को नै आज आम सहित अतिथि भाबरे सोआ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस रो दुई जण स्टूडेंट इंटर्न जॉइन करिसंती जो माने खूब सुंदर भाबरे आपण मानक पई नै आसीबे गोटे सुंदर आलोचना. तेबे चलंतु आज रो दुई अतिथि को स्वागत करी आरंभ करिवा सुंदर आलोचनाटी. Namaskar, myself Dr. Debanshi Dash. I am Debanshi Nayak. So we are doing our internship at the Institute of Dental Sciences from SOA University. So we are here to brief you about the lack of awareness in BLS, that is basic life support, because ajikali time re there are rising cases of cardiac arrest or heart attack. So and people are really not aware about that. So for that we are here. And आजिकली गोटे मिसकनसेप्शन भी चलची कि कोविड वैक्सीन जोगु हार्ट अटैक्स रो इंसिडेंसेस बहुत बढ़ी चलची which is not true. आउ हार्ट अटैक एक्चुअली it gives you signs beforehand but we ignore it. It depends upon the lifestyle and many other factors. So we are here to brief you about the intro regarding the basic life support so that you can use it in emergency cases. So shall we start now? Yep. First question to you. What Okay. is basic life support? See, basic life support, it is the first line of management ame kahu, which can be performed by any individual, any bystander or layman. Normally out of hospital emergencies, which can be performed by anyone like a bystander or any individual. Till any medical emergency is not present, we can perform BLS. जेमिति कि सबु बेले हॉस्पिटल आखापाखी न थाए किंबा एम्बुलेंस तो केबे सडनली कि इमिडिएटली आसिकी पहुँचेनी तो से टाइम रे आमे प्रिपेयर थिबा कथा गोटे बेसिक लाइफ सपोर्ट दवा पई जो द्वारा चांसेस ऑफ सर्वाइवल टा बढ़ी थाए. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आउट हॉस्पिटल इमरजेंसीज? आउट हॉस्पिटल इमरजेंसीज रो आमे बुझ पारिया जेंति कि सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किसी ट्रामा आईगला इन चोकिंग केसेस और ड्राउनिंग केसेस से वी कैन यूज BLS. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज BLS composed of? What does it contain? See, BLS is a structured component जोटा कि आमर सिस्टमिक बा इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन पाई आमे परफॉर्म करू. तो सेथिरे आसी जाउची आमर ABCD. ए हैला आमर एयरवे मैनेजमेंट, बी हे जाउची ब्रीदिंग सपोर्ट, सी हैला सर्कुलेशन असिस्टेंस और डी हैला डिफिब्रिलेशन. एयरवे मैनेजमेंट बहुत वाइटल, सेटा फर्स्ट जिनस जोटा रहिबा दरकार पेशेंट मानकटे. So to maintain a patent airway is the most vital part of BLS. The main technique that we can use is head tilt, chin lift, so that the tongue does not fall back and the airway is maintained. Now in case of any spinal injury or such, we can use jaw thrust maneuver without manipulating the spine. And in case there is any airway obstruction, we can do abdominal thrust or Heimlich maneuver, as we know. And about breathing support, we use rescue breaths, which is either given mouth to mouth or we can use a barrier device. Now coming to circulation assistance, जोटा हमें चेस्ट कंप्रेशन कहू बा CPR कहू. CPR हैला हमर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, which is the hallmark of BLS we say. तो सेथिरे कोण हुए, we normally use the heel of the hand to at the center of the chest of the victim.
Now with the other hand, we do what? Interlock the fingers. Then before that, we have to keep certain things in our mind. Jemiti ki our elbows should be straight and our shoulders should be just in front of the victim's chest. And also we have to maintain the depth of compression of around I guess 2 inches or 5 cm, and the rate of compression should be 100 to 120 per minute. ए थ्रू कौन हुए कि ब्लड सर्कुलेशन जोटा कि आमर ऑक्सीजनेटेड ब्लडटा ब्रेन को जाए फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग. तापर आसी जाउछि हमर डिफिब्रिलेशन. आमे देखिथिबा केसेस जोठे कि हार्ट बीट सडनली स्टॉप हो जाए, जेमिति कि एरिथमिया हे गला कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हे गला. से सब केसेस रे आमे कोन करू, आमे वाया एईडी दैट इज ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जोटा कहू. इट इज अ डिवाइस through which हमें इलेक्ट्रिक शॉक दो. से कौन हुए, इट रिस्टोर्स द नॉर्मल कार्डियक रिदम. सो नाउ what is the basic difference between performing a BLS on a adult and an infant? Like same ना किछि different अच्छी सेटा. The principle of BLS is same. एठी in adults हमें दो chest compressions, rescue breaths and defibrillator. They have delicate physiology, so we use fingers for that. We use fingers at the two fingers at the center of the chest, and the depth of compression is less, 1.5 inches, but the rate of compression is the same, 100 to 120 compressions per minute. So the next question is what is the difference between ALS and BLS? See, ALS है हमारा advanced life support, which is totally different from BLS. ALS रे हमको trained healthcare professionals दरकार, because एटा गोटे in hospital emergency situation रे हमें करू. जेमिति कि इंट्यूबेशन हे गला बा कार्डियक रिदम मॉनिटरिंग हे गला, किंबा आमे कहि पारू किछि मेडिकेशन भी प्रेस्क्राइब करिवार थिबा, एडमिनिस्ट्रेशन करिवार थिबा. तो से सब पई हमको गोटे हेल्थ केयर प्रोफेशनल जे कि ट्रेंड थिबा, ट्रेंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल दरकार. किंतु BLS आमे जेमिति कथा आइथिले, BLS नीड्स लाइक एनी लेमैन और बायस्टैंडर कैन डू इट, लाइक चेस्ट कंप्रेशन कि एयरवे मैनेजमेंट थ्रू रे आमे करि पारिबु. सो सेटा गोटे आउट ऑफ हॉस्पिटल इमरजेंसी, एंड ALS रे आमे इन हॉस्पिटल इमरजेंसी सिचुएशन रे परफॉर्म करू. सो एबे बेसिक लाइफ सपोर्ट रे गाइडलाइंस रे बहुत चेंजेस आसीची. व्हाई डू यू थिंक अपडेट इज नेसेसरी? हमरो स्टडी अनुसार आमको जहाँ भी करेंट सिचुएशन अच्छी, तो से अकॉर्डिंगली आमको भी आगु को सब जानिबा कथा एंड प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करवा कथा, सो दैट इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन लाइफ. तो जोटा बेसी इफेक्टिव वे हम सेटा ही आमे फॉलो करिकी अपडेटेड रहिबा. सो नाउ रिसेंट अपडेट्स कथा कहिला जदी, तो what are the recent updates in our guidelines now? So recent updates include high quality chest compressions, like in between compressions we should not give any unnecessary intervals also, and we should use early defibrillation, and we should use adequate depth of compression. So what are the advantages of BLS? BLS रो एडवांटेजेस या कहबी कि केतळे सडन कार्डियक अरेस्ट आसिला किंबा हार्ट अटैक आसिला, तो सबु बेले आम पाखरे पाखापाखी हॉस्पिटल न थाए, किंबा सबु बेले तो इमिडिएटली को एम्बुलेंस आसीबनी. समस्त को जानी थिबा दरकार कि BLS रे देयर आर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, बोथ कम्युनिटी और इंडिविजुअल लेवल. आमको सेतिके प्रिपेयर और इक्विप रहिबा कथा, सेतिके अवेयरनेस भी स्प्रेड करिया कथा कि हाँ जदि एपर्यंत एम्बुलेंस आसीनी आमे किछि गोटे आमे निज आडू करि पारिबा, so that there are few chances at least to save a patient's life. So coming towards the conclusion, what do you think, who needs to be trained in BLS? So any doctors, nurses and paramedics can perform ALS, advanced life support, but BLS is such a thing which any teacher, any trainer, like we have fitness coaches and all, they should know about BLS, because these emergency situation can happen anytime. So Debanshi, there is a term called scene safety. Like, have you heard about it? As I know, it is the first crucial step before handling any emergency. Can you please tell me more about this? Of course, scene safety is the first
crucial step, because the rescuer should always look for his or her own safety before saving the life of the patient. The rescuer should always judge the environment in case there is traffic or any down power lines, or in case there are any aggressive bystanders, or there is train accidents and all. Okay. So since the BLS, the term BLS is the first response, so shouldn't it be confused with first aid? I think no, like BLS is basically we perform when there is life threatening situations, like I said before, cardiac arrest हे गला कि heart attack हे गला से भलिया. लेकिन फर्स्ट एड रे कौन फर्स्ट एड आम तेबे परफॉर्म करूँ जिते किसी गोटे बर्न्स आसीगला किसी इंजुरीज हो गला से केसेस आम फर्स्ट एड परफॉर्म करूँ. सो कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन नाउ. So now our college, that is IMS and some hospital, has come up with various training and certificate courses like COLS or ACLS and PALS. Can you please explain? So let's elaborate on that. COLS, which was also conducted by IDS, our college, it stands for compression only life support, which uses compression as the only way to maintain the vitality of the patient. So it involves all the principles such as compressions, chest compressions, rescue breaths and defibrillators. Then we have PALS, which is also given by the IMS and some hospital. The course is available there. It is pediatric advanced life support. Then we have ACLS, advanced cardiac life support. All these certificate courses are given by IMS and some hospital. It can be opted by any health professional, which will be useful. श्रोता बंधु, बेसिक लाइफ सपोर्ट को नहीं थिला आमर आज एक विशेष उपस्थापना. मु आशा करछि आज अतिथि माने खूब सुंदर तथ्य सब आपण मानक पाखरे पहुंचाई पारथिबे. तेबे आज तो समय हे गलानी. आज कार्यक्रम को एठी शेष करछि. आम अतिथि मानकु एबे विदाय देउछि. मु पुणी थरे आपण मानक पई ई कार्यक्रम रे नै आसीबी आउ एक नुआ अध्याय. टिल देन स्टे ट्यून टू 90.4 सोआ रेडियो एंड कीप स्माइलिंग. आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो.